Assalamu alaikum and welcome to the deeply insightful episode of Health Talk dedicated to breast cancer awareness. Today we are privileged to have the presence of our distinguished guest who is ready to unravel the mystery of breast cancer. We will embark on a journey into the labyrinth of risk factors, understanding the intricate matters between genetics and the development of breast cancer. Our expert will tell us about the transformative role of precision medicines, offering hope to the patients of Khyber Pakhtunkhwa. In the heart of Peshawar, we will touch upon the challenges faced by breast cancer patients, emphasizing the importance of psychological support tailored to the local context. So to talk on these factors, today we are joined by Dr. Atif Munawar. He is consultant oncologist in Northwest General Hospital and Research Center, Peshawar. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Thanks for inviting me on this forum. Okay, thank you, sir. Sir, my first question regarding breast cancer is that what are the most effective methods for breast cancer prevention and how important is early detection in improving the chances of successful treatment? Actually, as you know, breast cancer is the most common cancer that occurs in females. There are certain risk factors that may lead to the development of breast cancer. Among them, some are the modifiable risk factors and the others are non-modifiable risk factors. If we talk about the modifiable risk factors, that include the obesity, sedentary lifestyle, smoking. Although there is no direct link between these risk factors and the development of breast cancer, but these risk factors usually increases the occurrence of breast cancer in female patients. Second, risk factors include the non-modifiable risk factors that include the age of the patient and female gender. If as the occurrence of breast cancer increases with advancing age, along with that, there are some other risk factors. Among them, most important one is the prolonged estrogen exposure that usually occurs in those females who develop early menarche, that means the start of menstruation at the age of 12 or before the age of 11 years, or those patients who have prolonged menopause or their cessation of menstruation at the age of about 55 years or 52 to 55 years. Along with that, those ladies who are either infertile or those ladies who don't have kids, or the late age at the birth of the first child, it means that age more than 30 years, they are at a high risk of development of breast cancer. Along with that, there are some genetic factors that include if you have a strong family history for breast cancer. It includes both maternal as well as the paternal, both sides the history. Then you will develop breast cancer. Chances of development of breast cancer is higher as compared to those who do not have a positive family history. There is some role of genetic factor as well that include the BRCA1 and BRCA2 gene mutations. If the patient has BRCA1 mutation positive, then the risk of development, lifetime risk of breast cancer is about 60 to 80%. And if the patient has a BRCA2 gene mutation, then the development of breast cancer is about 50 to 60%. These are the risk factors along which may play a role in the development of breast cancer. The second part of the question is regarding the prevention. Actually, there are two methods with the help of which we can detect the occurrence of a breast cancer at an early stage. Among them, one is the self-breast examination. Every woman should do her breast examination once a month, and if she notices any change either in the shape of the breast or in any lump or any nipple discharge or any mass in the axilla, she should immediately see a doctor or an oncologist. Secondly, if those ladies who are either more than 40 years of age, they should do a mammography on annual basis. On mammography, you can pick the lump if its size is about 2 to 4 millimeter, while clinically you can feel a lump if its size is 1 centimeter or more than 1 centimeter. So every woman who is 40 years or more than 40 years, she should do annual mammography for early detection.
Secondly, those ladies who have a family history positive, their maternal aunts or paternal aunts, grandmothers, they have breast cancer, they should do early mammography and ultrasound at the age of about 35 years. They should start this test at the age of 35 years. So with the help of this early detection, diseases will be picked up at an early stage that will lead to improved survival, better outcome. Patient will have better survival if the disease is picked up at an early stage. ओके अच्छा सर, इसमें जैसे आपने जेनेटिक फैक्टर्स की कंट्रीब्यूशन बताई ब्रेस्ट कैंसर में, इसी तरह दूसरे और कैंसर्स भी होते हैं, लाइक फैमिली हिस्ट्री में ओवेरियन कैंसर, लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, पैनक्रियाटिक एंड मच मोर. तो अगर ये कोई पेशेंट आता है इनकी हिस्ट्री के साथ, तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर सकते हैं? जी, जिन पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, एंडोमेट्रियल कैंसर्स की, ओवेरियन कैंसर्स की, दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. दीज आर रिलेटेड टू द genetic mutations. That's why they have the higher risk of development of breast cancer. My next question is, can you explain how breast cancer medicine is being used in this treatment of breast cancer? ब्रेस्ट कैंसर मेडिसिन एक्चुअली बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट है, दैट इज़ क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ आइदर द विद कीमोथेरेपी and surgery followed by radiation therapy and hormonal treatment. Basically this is the broadly treatment of breast cancer. Usually जो अगर ट्यूमर का साइज़ बहुत बड़ा है, एक्जिला के अंदर या आर्मपिट के अंदर डिजीज़ गई हुई है, तो उसको पहले आप कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं, और कीमोथेरेपी से ट्रीट करने के बाद आप सर्जरी करते हैं, और सर्जरी के बाद जो है वो रेडिएशन थेरेपी होती है. अगर उसमें पेशेंट में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव हो, तो उनको 5 इयर्स या 10 इयर्स के लिए हार्मोनल एक टैबलेट दी जाती है, जो उन्हें 10 साल तक, ये 5 to 10 इयर्स तक उसे खाना होता है, ताकि ब्रेस्ट कैंसर की जो वापस आने का रिस्क है उसको कम किया जा सके. अलॉन्ग विद दैट, अगर ब्रेस्ट को आप प्रिजर्व कर रहे हैं, सिर्फ लंप को रिमूव कर रहे हैं, तो आप एडजुवेंट की सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी भी उसको दी जाती है, ब्रेस्ट को या चेस्ट वॉल को रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है. Okay. Breast cancer diagnosis and treatment can be emotionally challenging. What kinds of psychological support and resources are available for patients and their families during this journey? एक्चुअली एज यू नो कि बेसिकली कैंसर का डायग्नोसिस ही एक पेशेंट के लिए साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, नॉट ओनली फॉर द पेशेंट बट आल्सो द फैमिली. सो इफ व्हेन वी सी द पेशेंट्स इन द क्लिनिक्स एंड वी सी दैट दे हैव सिम्पटम्स ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वी सेंड देम टू आवर साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट. उनके पास उनको भिजवाते हैं, उनके काउंसलिंग सेशन करवाए जाते हैं, पेशेंट की भी और उनकी फैमिली की भी, ताकि जो उनका ये ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट है उसमें इनका स्ट्रेस फैक्टर जो है एटलीस्ट उसको कम से कम किया जा सके, और उनका पेशेंट अपने आप को बेहतर फील करें ड्यूरिंग ट्रीटमेंट. Okay. My last question is that some patients explore alternative therapies alongside with conventional treatment. What is the oncologist perspective on the complementary and alternative medicine in context of breast cancer treatment? मेरे ख्याल से जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स बहुत से लोग यूज़ करते हैं, जैसे कुछ लोग हकीम के पास जाते हैं या कुछ दम कराते हैं, कुछ पत्थर को दम करके उसके ऊपर बांध रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सारी की सारी जो है वो आउटडेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितना अगर आप इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो आप डायग्नोसिस को डिले करते हैं, ट्रीटमेंट को डिले करते हैं. कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो एक अरसे तक वो कुछ पेशेंट जो होम्योपैथिक मेडिसिन, कुछ दम दरूद या ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, और इनिशियली अगर वो स्टेज 1 पे हमारे पास प्रेजेंट उन्हें होना होता है, तो अनफॉर्चुनेटली जब वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो वो उनको स्टेज 4 तक पहुंच चुके होते हैं, तो वो क्योर से पैलिएशन की तरफ जा चुके होते हैं, कि जहाँ पे हम उस पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, वो ठीक कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली डिजीज़ जो है ऊपर हम क्योर से जस्ट कंट्रोल की तरफ जा चुके होते हैं. तो आई थिंक कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसको अवॉइड करना चाहिए, और जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं उसी को ही फॉलो करना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए. Thank you so much, sir, for your time and for your expertise. Thank you very much. So for more informative videos, you can visit our website www.himmelpharmaceuticals.pk, or you can visit our different social media platforms. Till then, take care and Allah Hafiz.